Hello and welcome to another episode of Mashable Pakistan Lab. In today's podcast episode, we have the co-founder of Media Matters for Democracy, Sadaf Khan. Hello and welcome, Sadaf. Hi, Fatma. Thank you for inviting me. So before we head into the main topic of discussion, जो है हमारा आज, I would like you to sort of introduce Media Matters for Democracy. आप, that it goes by as a non-profit organization, and usually when it comes to media and news, non-profit is not something that people think a non-profit organization भी कोई हो सकती है news की. So just Yeah. introduce the organization a bit. I like to think that we are unique. Media Matters for Democracy हमने आज से 6 साल पहले create की थी. The organization is created by a group of journalists actually. Me and my co-founders, we spent a long time in newsrooms in Pakistan. हम सबने 10-12 साल लगाए different newsrooms में. And what we started feeling eventually is that the media in Pakistan is going in a direction that was not perfect. That was not a progressive and good direction. There were issues, not just with the quality of content that the media was producing, but also there were structural issues, systematic issues that came from the policy, the laws around it. And so we kind of switched and created Media Matters, whose objective essentially is to help create an environment where the media and the press are able to independently operate in Pakistan and are able to do their job optimally. तो जो हमारा काम है ये इन 2-3 लाइंस पे होते हैं. हम पॉलिसी पे काम करते हैं, whether they deal with the media, and we see the internet as a part of the media. So we work a lot on the internet as well, the social media as well, and we have a large program that deals with professionalism within media, and especially जो technology की convergence है. We work a lot in that, in capacity building. We do research. We do so essentially we try to bring together and thread together all these different components that affect the practice of the news media in Pakistan. So yeah, that's why you see this whole non-profit working specifically on media thing happening here. Yeah, so we have some questions around this specifically, आपका जो general काम है उसके, and how effective that has been. But we will take them at the end when we go to social media questions. So let's just dive into the report that you guys did. You guys have recently published a report talking about Pakistanis की reliance on mainstream media as far as news about the pandemic was concerned. And उसका जो heading और title था वो थोड़ा सा I would say different था from what we were seeing as global trends, because with all this fake news का एक अजीब सा जो environment हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, and it sort of spiked during the pandemic. So let's just share कि how did you decide, मतलब obviously we know it was like it was needed given the time जो चल रहा था, but what made you guys decide कि हमने we should be doing something of Yeah. this sort? So essentially, there were two factors. एक तो ये तो कि obviously COVID has affected the media in Pakistan in the worst possible manner. There have been layoffs. Journalists have fallen victim to COVID. बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर effectees भी हैं, multiple deaths भी हुई हैं, pay cuts भी लगे हैं. So it was a scenario which was really difficult for journalists to deal with. And just bubble के अंदर हम लोग रहते हैं. I feel social media posts that we were seeing, the way government officials were talking about media, there was an impression being created कि शायद media अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रहा. There was an impression being created that either media is hyping up the issue or they're not giving people the material they need, the information they need. And there was just this whole lot of negativity that was affecting how media was operating. तो एक तो ये वजह थी, और दूसरी वजह ये कि obviously media's function is essential, and a pandemic, COVID specifically, is something in which information is vital. Uski importance is not just having people knowing, but people knowing is actually linked to them being safe and healthy. So even these were the two things we wanted to figure out: a, whether this noise about the lack of public trust in media was credible, kya ye sach hai,
और दूसरे अगर ये सच है तो how is the public faring, how is the public actually getting the information it needs, and if not, what kind of information does it need, what other sources is it turning to. So that was kind of the standing point where we started thinking about this research, and we thought के आपने research पढ़ी है, and I'm sure कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, I hope they can also go through the research at some point. We termed this as something that's very baseline. It's a basic survey. It's not very detailed intensive because ये बेसिक इसलिए है क्योंकि इस चीज पे कभी काम पाकिस्तान में अभी तक और किसी ने नहीं किया, ये नहीं हुआ. So we were trying to basically map what the information ecosystem is, where the public is turning to for news, where are they placing their trust on, and what kind of information that they need. So that was the thought process behind designing the survey. So as the headline of your report said that Pakistanis actually relied on mainstream media news for their information on COVID and everything around the pandemic, government kya kar rahi hai and sara kuch. So just share some key stats with us. What were some of the highlight factors that the survey resulted in? Yes, so जो आपने point out किया है ना factor के a lot of people are relying, and that surprised a lot of people, and I Yeah. also started looking at it more deeply when the results came in कि ये ऐसा क्यों है. I feel कि one thing that we were able to do with this survey is to reach a demographic. जो हमारे respondents थे उसके अंदर आप अगर majority देखें, there are people who fall between the income bracket of 20,000 to 60,000 per monthly income. So per household monthly income, sorry. And that demographic is actually the majority of Pakistan, and that is the same demographic that's not well reflected on social media. There are issues of ability, there are issues of access to devices, there are issues of expression, language की वजह से, लेकिन ये वही लोग हैं जो हमारे मीडिया के और हमारी पॉपुलेशन का मेजर पार्ट बनाते हैं. तो इसलिए जो एक डिस्कनेक्ट है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, जस्ट दिस डेमोग्राफिक explains a lot of why this is coming from. दूसरी एक फाइंडिंग जो इसको वाजे करती है वो ये कि एक हमने ट्रेंड देखा कि ओनली 5% जो लोग थे, यानी 200 में से सिर्फ एक रेस्पोंडेंट were relying on newspapers as primary source of information. It was a bit sad for me because newspapers की अपनी एक legacy है और press के अंदर उनकी एक जगह है, लेकिन the fact that so many people are relying on broadcast media again shows कि हमारी जो public है और especially जो larger part of our population is dependent on a medium जहाँ पे information audio visual forms में होती है, जहाँ literacy का, जहाँ पे वक्त का, जहाँ पे cost का उस तरह से impact नहीं होता. So that was an interesting finding for me. जो एक दूसरी चीज़ मुझे बहुत interesting लगी इसके अंदर वो ये थी कि तकरीबन 64% लोगों ने ये कहा कि कोविड के बारे में whatever information they need, the media is providing them. And then we kind of look more into कि किस तरह की information लोग देख रहे हैं. And this is where it surprised me as well, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी discrepancy भी एक तरह से लगती है, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए कोविड से सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर्स. द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल जो हमारे रिस्पॉन्डेंट्स थे उन्होंने कहा कि दैट्स द इंफॉर्मेशन दे लुकिंग फॉर. एंड अगर मैं टीवी देखूं तो मुझे ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन खुद नजर आती है वो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेस की है, जिसके अंदर लोगों का सबसे कम इंटरेस्ट था. सो मे बी इवन दो वी डिडंट गो इनटू द डिटेल, बट मे बी वो जो इंफॉर्मेशन नीड है वो, क्योंकि मीडिया जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है या एनसीओसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सारी चीजें जब वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, मल्टीपल चैनल्स हैव स्टार्टेड रनिंग पब्लिक सर्विस कैंपेन्स दैट डील विद मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें एटसेट्रा. सो इवन दो कि हमें वो इन्फॉर्मेशन बहुत पॉलिटिसाइज नजर आती है, बट इन्फॉर्मेशन नीड जो है रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज रिगार्डिंग कोविड वो पूरी हो रही है. बट आई थिंक देयर इज ऑल्सो अ लेसन फॉर द मीडिया, बिकॉज इफ दिस इज द thing people are most interested in, I think the focus needs to increase, क्योंकि अभी जो information regarding specifically COVID safety and precautions आ रही है वो indirect आ रही है. I have not seen many packages or news reports that focus on exactly what is COVID, and this is critical at this time क्योंकि अब vaccination आ रही है, and हमारी unfortunately history है anti-vaccination की. We can look at polio as an example, right? And COVID is something कि once, अभी तो बिल्कुल नई है, शुरू है वैक्सीन का, but once बाकी दुनिया में सेकेंड फेज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है, अगर पाकिस्तान के अंदर वही एंटी वैक्सीन सेंटिमेंट रहता है, और वी आर सीइंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज
similar to those that are linked to the polio vaccine or whatever, and there is a anti-vaccination sentiment, तो वो पाकिस्तानियों की traveling ability और बाकी जो चीज़ें हैं उन सब पे restrictions बन सकता है. So I think the lesson for media from the finding के people are most interested in getting information about safety and precautions is that they need to improve a bit of scientific reporting rather than just reporting के political responses क्या लोगों के आ रहे हैं. आई थिंक ये भी थोड़ा सा सैड है कि बहुत बड़ी मेजोरिटी लोगों की 55% लोगों ने ये कहा कि मीडिया के जो एथिक्स हैं वो एवरेज हैं, और तकरीबन 19% लोगों ने ये कहा कि मीडिया के जो एथिक्स हैं या वो ख़राब हैं या अच्छे नहीं हैं. देवर 17% हु सेड कि वो हाई हैं. सो इन टर्म्स ऑफ कोविड रिपोर्टिंग आई थिंक दिस इज़ वेरी सैड एंड कंसर्निंग, क्योंकि इवन एवरेज इज़ नॉट अ गुड स्कोर. जब आपकी कंट्री एक पेंडेमिक से गुजर रही है, देयर आर ऑलरेडी पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली सफरिंग, एंड सो आई फील कि लोगों की इतनी एम्बिवलेंस नहीं होनी चाहिए मीडिया की तरफ से. दे शुडंट फील ब्ला अबाउट व्हाट मीडिया इज रिपोर्टिंग, राइट? So even though like there is good news for media, people are relying on it and believing on it, there is a gap in terms of what it delivers, and there is a chance for improvement. So I think they should also think about what is exactly ethics, and this is also an opportunity for researchers. What is exactly ethical in the public perception when it comes to COVID reporting? So अगर लोगों को lack of ethics लग रहे हैं, exactly how are they perceiving it? I think that's something जो researchers को भी, and we will also try कि we look into it in more, this finding into more detail what exactly is happening here. And I think I will just share one more finding जो social media से मुतालिक है, जो trustworthiness है. So हमने एक question ये रखा था कि लोग किस पे rely करते हैं और कहाँ से information gather करते हैं. And after mainstream media, people were relying on family and friends. And जो social media है, जो which is the source which is flooded with information on COVID, उसके ऊपर trustworthiness लोगों की कम है. अब ये अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि we know कि disinformation फैलाई जाती है, and there are no editorial controls on social media. So अगर लोग critically देख रहे हैं उस information को जो social media के through उन्हें आ रही है, या the information they are getting through digital platforms, then it also shows a growing ability for people to kind of engage with the information they are digitally getting. So I see it as something good, something that says that bodes well for पब्लिक्स ओन मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, क्योंकि पहले हमने ये भी देखा है कि व्हाट्सएप पे जो भी आ जाए, आई एम श्योर आप भी व्हाट्सएप पे आपके बड़ों का ग्रुप होगा, जो एक फैमिली ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन, जो नानियां फूफियां चाचियां, एवरीबॉडी इज लाइक ये देखो ये मैंने देखा था फॉरवर्ड. सो इफ पीपल आर getting a bit untrustworthy, they are questioning the information, then I think there is a critical thinking process going on. Yes, we need to figure out कि ये ऐसा तो नहीं है कि जो भी चीज सोशल मीडिया पे आ जाए वो भले जैसे भी सोर्स है वो उसको भी ट्रस्ट नहीं कर रहे. सो अगेन देयर इज अ स्कोप फॉर मोर इन्वेस्टिगेशन हियर कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं, किस चीज को ट्रस्ट करते हैं, किसको नहीं करते. बट ओवरऑल आई फील दैट दिस इज अ पॉजिटिव फाइंडिंग. इट शोज दैट पब्लिक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है through social media. Yeah, I think I'll stop boring our respondents with more No, critical no, findings. these are very Yeah. interesting facts, and from what you just said, एक थोड़ा सा this was something that was running in my mind. आपने जैसे mention किया कि this was a very interesting question where you asked कि after mainstream media people were relying on friends and family, and sort of I was connecting this to that social media wala aspect as well, because you never know where your friends and family are getting their Yeah. source of information. So while you actually pointed out that you guys found out in this report that there was an aspect of critical thinking among the specifically this income job demographic tha, but there's still this issue of misinformation spread कि जी किसी ने WhatsApp पे देखा और फिर वो specifically जिस तरह आपने अभी बताया कि usually आपके family and friends में या आपकी अपनी family में there's an elderly group who have sort of during the pandemic lockdown been forced to sort of learn technology. Unfortunately, वो technology से जो information उन्हें मिल रही है, that Yeah. is maybe something that is an overload that they are not used to, and this is what they are convincingly then spreading. जैसे I don't think it's just in Pakistan. I think it's a world over thing, because the idea कि जी vaccine से आप के through आपको chip लगा दी जाएगी,
that was not something जो सिर्फ पाकिस्तान में था. I think ये it was known in world में है जी बिल्कुल. other Even countries in as well. countries like the US, there is a huge debate going on. बहुत सारी especially जो ये Trump supporters and Yeah, people from that group, there is a huge anti-vaccine movement going on across the world, and I think yeah. yeah, it's critical कि globally इसका response आए in terms of providing good information. सो अगेन जो इस पे आपने जो सेकंड जैसे एंटी वैक्सीनेशन का आपने बात की एंड obviously the anti-vaccination campaign जो है that's a global thing as well, but Pakistan में we have like a test case हमारे सामने which is of the polio vaccine. Yes. But there was an so interesting fact that I got to know कि जब start में लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में क्यों जो है वो controlled थोड़ा सा लग रहा था कि जी we have been somehow been able to control the situation compared to our neighbor countries. One thing which I don't think a lot of people know is because it was a polio workers ka experience that was coming in handy when it comes to contact tracing. I don't remember the name of the report, but somebody from the medical profession shared it. कि one of the factors जो वो study कर रहे हैं, it is the fact कि polio workers are already equipped with doing this contact tracing because polio virus भी को they have to contact trace कि अगर किसी एरिया में किसी बच्चे को हो गया है they have to Yeah. isolate it. So it was that experience Very that was coming in handy, but uh, we really don't treat polio workers very well until unless कोई हमें good. unfortunate Yes. incident नजर नहीं आ जाता. So my question on this is, and because you said that this is a base study and something that you guys want to build up on it, this anti-vaccination वाली भी जो चीज है, do you guys aim to explore this further because ये एक बहुत मेजर इशू है एंड लाइक द पोलियो इंसिडेंट दिस कैन बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर अस स्पेसिफिकली इन द गिवन द फैक्ट कि कुछ वैक्सीन रिएक्शन के इंसिडेंट्स जो हैं वो न्यूज में आ रहे हैं. सो एनी थॉट्स ऑन दैट? Yes, so we have a large program which focuses on media information literacy. It's called FAHM. Or media information literacy, for those who don't know, is the study of information जिसके अंदर disinformation को identify करना, समझना और उसके बारे में capacity building trainings और research वगैरह हम लोग करते हैं. So through that program, we are planning to फिगर आउट के कम से कम एक तरीका एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिसके अंदर वैक्सीन के बारे में अगर कोई स्पेसिफिक मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसको फैक्चुअली काउंटर एक्ट किया जा सके, काउंटर किया जा सके. एंड वी आर थिंकिंग अबाउट कि किस तरह से रिसर्च कोई हो सकती है जिसमें व्हेनेवर देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन और जब फैलती है और जो लोग उस पर बिलीव करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, कोई फियर्स इन्वॉल्व होते हैं. एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो ग्लोबली लोग फेस कर रहे हैं, इवन रिसर्चर्स भी, कॉर्पोरेट्स भी, वो ये कि बहुत सारी दफ़ा सिर्फ ये नहीं होता कि पीपल डोंट नो बेटर, बट देयर इज अ कंफर्मेशन बायस अमंग पीपल. जो लोग अपने एग्जिस्टिंग जो भी बिलीव्स हैं उसके साथ जो भी चीज़ मैच करती है, जो उसको सपोर्ट करती है, वो डिस्पाइट नोइंग बेटर ऑफन वो उस मिस इन्फॉर्मेशन को बिलीव करता है. इंडिया में बहुत सारी स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं, बहुत डिटेल्ड वेल फंडेड लार्ज स्केल स्टडीज, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली मिस इन्फॉर्मेशन वायलेंट भी बहुत दफ़ा हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बिहेवियरल उसके हिसाब से स्टडी नहीं हुई, वैल्यू जजमेंट के हिसाब से स्टडी नहीं हुई. सो येस, वी आर लुकिंग फॉर रिसोर्सेज, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम किस तरह समझ सकते हैं स्पेसिफिकली लोगों के क्या फियर्स हैं. सो ऑल्सो नॉट जस्ट कि ये एक मैप किया जा सके कि क्या कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, बल्कि ये चीज़ें भी मैप करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड पीपल टू बिलीव इन दोज थेरीज. और में से बहुत रिडिकुलस थेरीज होती हैं, लाइक जो बिल गेट्स के हवाले से सारी बातें चल रही थी. अगर आप लॉजिकली सोचे तो कोई रीजन नहीं है कि लोग उनके ऊपर बिलीव करें. देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोरीज जो आपको फिक्शन भी पे अगर आपको कोई नॉवल मिले तो आप कहेंगे क्या अनबिलीवेबल चीज लिखी है, लेकिन अगर लोग बिलीव कर रहे हैं तो दैट मींस देयर इज एन अंडरलाइंग फैक्टर और बिहेवियरल चेंज के हिसाब से. सो दैट्स द एंगल वी आर लुकिंग एट नाउ कि हाउ डू वी एग्जैक्टली डू रिसर्च. एंड ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स रिसर्च है, एंड वील ट्राई एंड गेट सम रिसोर्सेज. एंड जब भी वो पॉसिबल होता है और जब तक नहीं होता तो वी have a Twitter account called सच्ची खबर. आजकल वो dormant है, but on सच्ची खबर that's our aim. We fact check and give
factual accounts of the information जो अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है जिसका कोई पब्लिक हार्म का इम्पैक्ट हो सकता है तो दैट्स व्हाट वी आर एमिंग टू डू इन दैट रिगार्ड. दैट्स जो बिल गेट्स का आपने रेफरेंस किया, आई थिंक वो एक प्रीएम्प्टिव टेड टॉक जो है, वो आई डाउट कि वो टेड टॉक किसी ने पूरी सुनी है या नहीं सुनी, बट वो उस टेड टॉक की हेडलाइन वाज ऑल द problem, where he was on what he actually said was pretty. I ended up listening to the entire TED talk. He was basically predicting the because of the climate issues that we have and nobody is taking them seriously, और जो हमने इतने long term plans बनाए हुए, he was predicting कि जी pandemics आएंगे. And अभी भी as we know कि the health workers, health के जो लोग हैं, जो scientists हैं, they're already predicting कि this is not the first pandemic in our lifetime. We will be seeing multiple. बट खैर आई थिंक दैट वो टेक्निकल चीज किसी ने फ्लिप हो गई और हेडलाइन जो है वो that sort of went into it. So moving forward, जैसे we already discussed कि ये जो कुछ biases and factors and वो सारा कुछ है, वो हम पाकिस्तानी एक तो domestic phenomena तो है ही है, but they also have like some resemblance to global trends as well of how people, dealt with this pandemic. My personal theory is कि maybe because this is the first one, तो it was उसकी एक shock value भी थी. Maybe अगली दफा शायद हमारी जो है वो थोड़ा सा बेहतर response होगा. But this ये जो आपकी findings थी, how different were they from some of the studies or surveys that we were seeing from international sources या other countries? How different this idea of relying on mainstream news was? So, क्योंकि there is a difference in the kind of markets, different studies are targeting. क्योंकि अगर आप globally देखें तो there is a heavy reliance on social media and digital platforms, but उनकी जो market है, they're also, generally they're consuming their information through mobile first. तो ये जो industry का change है और जो audience का change है वो वहाँ पे हो चुका है. So I don't feel कि कुछ ऐसा है कि वो अपने mainstream पे कम, वो उनका जो मेन स्ट्रीम है वो भी अब डिजिटल ज्यादा है और टीवी पे लोग शायद कम CNN देखते हो या BBC देखते हो और अपने मोबाइल्स पे ज्यादा वो चीजें एक्सेस करते हो. तो आई थिंक दिस इज द रीजन कि हमें अपना अभी भी जो मेन स्ट्रीम वाली चीज है, इट्स मोर टू डू विद मेथोडोलॉजी आई फील रादर देन जो एक्चुअल फाइंडिंग्स हैं, एंड मोर टू डू विद द मार्केट जिनके अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं. अगर ग्लोबल ट्रेंड्स देखें तो देयर इज स्टिल मेन स्ट्रीम के ऊपर डिस्ट्रस्ट के इश्यूज भी हैं, लेकिन ये भी है कि ऑब्वियसली क्योंकि वो ऑफिशियल वर्जन्स प्रेजेंट करते हैं, तो लोगों की रिलायंस भी हमें उसके ऊपर नजर आती है. आई थिंक द कोर डिफरेंस आई वुड फील इज कि जो गवर्नमेंट की तरफ से लाया जाने वाला डेटा है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम होना, आई फील कि वो थोड़ा सा मसला है. क्योंकि 30% लोगों ने ये कहा कि जो वो थी गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, दैट्स ईदर वेरी अनट्रस्टवर्दी और अनट्रस्टवर्दी. बहुत बड़ी मेजॉरिटी 45% लोग ऐसे थे हु आर लाइक के 24% लोग ऐसे थे कि वो ट्रस्टवर्दी भी नहीं है और अनट्रस्टवर्दी भी नहीं है. सो आई फील के इतने ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय ना करना इज नॉट अ गुड फाइंडिंग, बिकॉज इन अ सिचुएशन जहाँ अनसर्टेनिटी है, जहाँ भी कि इवन WHO को, गवर्नमेंट को भी है, वो कोई बहुत ज्यादा क्लियर बात तो नहीं कर सकते. दिस इज समथिंग दैट्स बियॉन्ड ऑल आवर कंट्रोल्स. ऐसे में जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है उसके ऊपर मैनेजमेंट पे लोगों का बिलीव ना करना, दैट आई फील इज डेंजरस, क्योंकि उससे chaos पैदा होता है. पीपल डोंट रियली नो, इफ दे डोंट ट्रस्ट व्हाट दे आर सेइंग, देन दे probably won't follow the SOPs that they are talking about, right? तो आई फील कि शायद ये डिस्ट्रस्ट हमारी जैसी कंट्रीज में, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में जहाँ ट्रेडिशनली गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट के इश्यूज हैं, ये शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो फ्रॉम लेट्स से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पब्लिक का और हुकूमतों का एक बेहतर रिलेशनशिप है आपस में. इन टर्म्स ऑफ मीडिया जो डिफरेंस है, जो आई थिंक लैक ऑफ रिलायंस ऑन सोशल मीडिया है, जो दूसरी जगहों पे बहुत ज्यादा है, इट्स जस्ट टू डू विद द मार्केट. क्योंकि एज आई वाज सेइंग अर्लियर कि हमारा रिस्पोंडेंट सिर्फ वो नहीं थे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत दे वर डाइवर्स रिस्पोंडेंट. सो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो पाकिस्तान में कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी रिलायंस ऑटोमेटिकली फिर टीवी पे ज्यादा हो जाती है. सो आई थिंक दैट्स द फाइंडिंग्स आर रिफ्लेक्टिव, और द डिफरेंस इन फाइंडिंग्स आर रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ generally in the public people are consuming media and information.
In the study, was there a component of like language? Because this आपने start में mention किया the demographic that you were targeting, Yeah. uh, it's not the privileged one. And by हाँ, privilege, I mean there are like stages सो and phases वो of privilege as well. बिल्कुल So, नहीं, जो हमारी स्टडी थी वो इंग्लिश उर्दू दोनों में कंडक्ट हुई थी। सो इट वाज़ बेस्ड ऑन अ टेलीफोनिक सर्वे एंड जिसको भी कॉल हुई उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो इंग्लिश में लेना चाहते हैं, उर्दू में लेना चाहते हैं। sorry to cut you off here, but in addition to English and Urdu language, what I was hinting on upon was the fact that when you were talking to these people, was there a component where it was asked or discussed the fact that it's Urdu is also not something that's commonly spoken in some of the segments in this country. सबकी या अपनी regional languages भी हैं which some areas prefer. So was there some way जो आपको was there a factor that this was a factor that was considered in this study? And if not, is this something that you guys will be thinking about when you are doing something as a follow-up on Yes, this? so we unfortunately couldn't offer the survey in regional languages क्योंकि obviously जितनी आप languages में करते हैं उसके resources और फिर वो सारे ज़्यादा required होते हैं। I do feel कि अगर possible हो या कोई replicate कर सके different languages में localized communities में then that would be really beneficial. One thing that I would like to mention कि only जो हमारे respondents हैं even though they come from a diverse economic background उनकी education they were they weren't any respondents जो बिल्कुल illiterate हो। Around 4% of the respondents ऐसे थे जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया था, मगर जो बाकी थे 20% respondents उन्होंने matriculation की थी, 35% ऐसे थे जिन्होंने intermediate किया था। So there was varying degrees of literacy. अब जाहिर है कि ये कंट्रोल की वजह से भी there was a segment that was left out जो बिल्कुल illiterate लोग हैं। और ज़ाहिर है उनकी रिलायंस भी टीवी पे ज़्यादा होगी और शायद उनकी जो सोच है टीवी के मुतालिक शायद वो डिफरेंट हो या नहीं हो, वी डोंट नो। बट या ये एक कंट्रोल हमने एक्सरसाइज किया था स्पेसिफिकली टू इंश्योर कि हम जिन लोगों को रीच आउट कर रहे हैं उनको उर्दू और इंग्लिश उर्दू या इंग्लिश समझ में आती हो। सो रादर देन एक्सपैंडिंग के बिल्कुल रीजनल में जाया जा सके विच आई वुड लव टू डू बट ऑब्वियसली रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम नहीं कर Okay. सके। But I will encourage other researchers या even universities जो local जगहों पे काम करती हैं कि वो replicate कर सकते हैं स्टडी को। The survey is available online instrument बना हुआ है and it would be interesting to see कि different क्या कोई geography का भी impact आता है या सिर्फ language का impact आता है, क्योंकि अगर what I find very interesting जब हम language linguistic diversity की बात करते हैं कि जो vernacular languages में channels हैं वो बहुत कम हैं। और जो आपकी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है वो उर्दू में हो रही है, राइट? Yeah. तो अगर ये डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग का तो फिर उनकी रिलायंस किस पे होती है? क्या रिलायंस उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे बढ़ जाती है जो फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से आ रहे हैं? सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो सिर्फ उनकी सर्वे को समझने की कैपेसिटी को नहीं डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, वो ये भी करेगा कि वो इंफॉर्मेशन क्या उन्हें मिल पा रही है। क्या True. हुकूमत इसमें कामयाब हुई है, क्या मीडिया इसमें कामयाब हुआ है कि वो लोग जो नहीं समझ सकते क्या वो उन्हें वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। एंड देन व्हाट हैपेंस इफ दे डोंट गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज चैनल्स, वो फिर कहाँ अल्टरनेट सोर्सेज क्या इन्फॉर्मेशन दे। आई थिंक इट्स वर्थ स्टडीइंग एंड आई होप समबडी डज टेक दिस अप। It was interesting because the reason I asked this question was that personal experience से भी I got to know कि some of the distant areas, specifically जो rural areas हैं, वहाँ somebody in the family had to travel and obviously they were like wearing a mask and taking gloves and सारा कुछ, and the locals were sort of amused at their outlook and they were like क्यों, because they are like and these were some of the areas where they didn't even know that there was a pandemic going on because they were like this much disconnected. So वो मतलब that sort of अब made एक me बात ना, wonder. अगर आप बलूचिस्तान के फिगर्स देखें Yeah, जितने लो हैं, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे इलाके बलूचिस्तान में ऐसे हों जहाँ पे लोग टेस्ट ही नहीं करवा रहे, जहाँ उन्हें पता ही नहीं yeah, होता। yeah, आई yeah, नो yeah, yeah. बलूचिस्तान की पॉपुलेशन कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि बाकी नहीं, नहीं, सूबों में इतने yeah, ज़्यादा आ रहे हैं और वहाँ जहाँ पे मतलब सेहत की सहूलियात भी नहीं है, पब्लिक हेल्थ इज़ रियली टेरिबल, yeah, गवर्नमेंट yeah, का yeah. हाल इज़ टेरिबल, और वहाँ से इतने कम फिगर्स आएँ तो आई फील कि ये इन्फॉर्मेशन
डार्कनेस वाला मामला तो है डेफिनेटली. Again, इससे पहले वाली podcast we did with Gurnaaz Baloch. She is one of the community development, a teacher. She works around, and she is from Balochistan. And उसपे तो we were talking about. She's also a research scientist as well. Water issues पे तो उनसे जब बात कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने जिस किस्म की कुछ obviously on ground realities because she lives there बताई तो we were like I was obviously thinking जिस तरह आपने कहा कि population बेशक कम है इतनी कम नहीं है it's about disconnect एंड लाइकवाइज इस तरह डिस्कनेक्ट का एक और चीज जो हाईलाइट हुई एंड वो मीडिया ने भी काफी हाईलाइट की बोथ मेन स्ट्रीम एंड सोशल मीडिया वाज द फैक्ट के रिमोट लर्निंग व्हिच बिकेम अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन वो उसके अडेप्टेशन के कितने मसले थे अगेन हाईलाइटिंग द वेरियस लेयर्स ऑफ प्रिविलेज एंड द फैक्ट के आप कहें कि हाँ जी रिमोट लर्निंग अर्बन एरियाज में हम कहें कि यहाँ पे मसले के थे कि जी रूटीन नहीं बन रही ये नहीं हो रहा and there were areas where there were the issues were कि जी access ही नहीं है we have to climb एक हमने mountain climb करना है था जहाँ signal आते हैं XYZ so this was also I think an interesting factor about reliance on social media नहीं है कि access ही नहीं है तो फिर आप reliance कैसे होगी स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स का आई थिंक इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली तो बलोच स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के ऊपर एक्चुअली क्रैक yes डाउन हुआ था पीपल वर yes अरेस्टेड इन yes केपी आई नो एंड जो स्पेशली न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक्सेस के इश्यूज के साथ साथ यू नो इट्स नॉट जस्ट कि वहाँ इंटरनेट नहीं है बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे घरों से आते हैं जहाँ मल्टीपल डिवाइसेस नहीं हो सकती सो एक वो वाला एक सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक है जो कम्प्लीटली ओवरलुक्ड है जेंडर का डायनामिक ओवरलुक्ड है कि अगर लड़के इंटरनेट कैफे चले जाते हैं ऐसी जगहों पे तो लड़कियां कैसे जाएंगी वहां तो कल्चरली ये वो नहीं है तो यस आई फील के जो पाकिस्तान में इनइक्वालिटी है यू नो नॉट जस्ट के सोशियो इकोनॉमिक बट इवन जोग्राफिकल इनइक्वालिटी कि इन एरियाज के अंदर इट डजंट मैटर कि आप यू नो गरीब हैं या अमीर हैं या क्या हैं अगर आप लेट्स से साउथ वजीरिस्तान में रहते हैं या आप बलूचिस्तान किसी जगह आप कितना इंटरनेट लगा लेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहाँ पे मौजूद नहीं है उस तरह से या आप उस कल्चरल स्ट्रक्चर से बाहर तो आप उस ट्राइबल कल्चरल स्ट्रक्चर से तो बाहर नहीं है सो आई थिंक जो मार्जिनलाइजेशन को यूजुअली हमने पाकिस्तान में डिस्कस होते हुए देखा है एटलीस्ट मीडिया के ऊपर एंड आई एम श्योर स्टडीज में तो कुछ एकेडमिक स्टडीज हुई बट जो मार्जिनलाइजेशन के वेरिएबल्स के अंदर सोशियो इकोनॉमिक के अलावा ये जो जोग्राफिकल एथनिक और इस तरह की जो चीज़ें हैं आई थिंक इस पैंडेमिक ने बहुत वाजे कर दिया कि हम इन सारी चीज़ों को यू नो मल्टीपल लेयर्स पे मल्टीपल इंटरसेक्शनैलिटीज से वी विल हैव टू सी एंड रिस्पॉन्ड टू देम या You raise a good point, and this is what I was sort of going to come to at this point in our discussion. कि ये एक मल्टी फैसेट इश्यूज हैं जो आज के नहीं है या जो पेंडेमिक के क्रिएट किए भी नहीं है दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दे जस्ट गॉट हाइलाइटेड ड्यू टू द पेंडेमिक but my next question would be कि given your journalistic experience in the mainstream newsrooms मीडिया ने तो अपना अगर काम कर दिया कि जो हाईलाइट कर दिया या जो ऑलरेडी जब जो चीजें हाईलाइट हुई उन्हें वॉइस कर दिया डू यू थिंक that those in authority in the government are actually realizing कि ये एक they are also seeing what we are saying कि जी ये issues हैं and they need to be addressed and obviously nobody is expecting कि एक you know एक वो magic wand जो है वो घुमाई जाएगी and they will be done in a day but is there at the policy level जैसे आपकी research है are you guys in touch with anybody the relevant authorities in the government presenting it to them and telling them कि you know there is room for more in-depth studies as well and how to take the situation forward So we are not planning to engage with the policymakers on this research per se, क्योंकि ज़ाहिर है इसका focus media पे है. But in terms of you know this response I see, I think it's very unfortunate. First wave के बीच में भी बहुत unfortunate था because what I'll see from I think 90% of the government representatives and the political representatives, मैं इसमें opposition को हरगिज़ अच्छा नहीं कह सकती क्योंकि what we saw was just political bickering. इसने सिंध हुकूमत ने गलत किया, पंजाब हुकूमत ने गलत किया, फेडरल हुकूमत ने गलत किया, हमें इसके अलावा चीजें नहीं नजर आ रही थी. And which is so sad because you know the country we live in,
most of the people don't have, they don't have anything to rely on. उनके पास सिर्फ words ही हैं जो वो उन तक पहुंचते हैं, और उनको अपने से related information के बजाय सिर्फ ये competition नजर आता है, and जो अब second wave चल रही है, it's horrendous, and I think अब airwaves are full of what PDM is doing. So वो जो पॉलिटिकल बिकरिंग एटलीस्ट फर्स्ट वेव के अंदर कोविड रिस्पॉन्स पर रिस्ट्रिक्टेड थी, अब वो चेंज होके वो एक ओवरऑल पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनी हुई है, उसमें गवर्नमेंट के अंदर ना हमें गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक की प्रायोरिटाइजेशन नजर आती है, क्योंकि इवन दो गवर्नमेंट इज सेइंग कि आप ना जल्द से करें कोविड फैल जाएगा, वी सॉ दैट द गवर्नमेंट इटसेल्फ हेल्ड जलसाज इन जीबी, एंड इट्स ओनली व्हेन कि अपने जल्द से खत्म करने का वक्त खत्म हो गया तब उन्हें ख्याल आ रहा है. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो रिस्पॉन्सेज है वो पॉलिटिकल और सेल्फिश हैं, और उसके अंदर पब्लिक की जो सेहत है और पब्लिक की जो जिंदगियां हैं, उसको किसी साइड से भी मुझे इम्पोर्टेंस मिलती हुई नहीं नजर आ रही. नो वंडर पीपल डोंट बिलीव, so many people don't believe in what the government is saying. Yes, I hope that media is also able to highlight this more effectively, in the sense, आईना दिखाने वाली बात है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कि ये आप कर क्या रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मीडिया भी ऐसे कर पाए, क्योंकि मीडिया खुद जिन प्रेशर से गुजर रहा है, और जिस तरह का प्रेशर है मीडिया पे पॉजिटिव चीजें दिखाने का, आई डोंट थिंक कि इवन मीडिया हैज द पावर राइट नाउ टू एक्ट के वो वाकई आईना दिखा सके दोनों साइड पे, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी. सो या इट्स अनफॉर्चुनेट, आई थिंक वेरी सैड रिस्पॉन्स फ्रॉम पॉलिटिकल Um, powerhouses. Yeah. So we will move on to some of the social media questions, and I will start off with a question which you sort of touched upon as well. But I'm just going to say, repeat it in case आपने उसमें कुछ और add करना हुआ, because that also reflects कि as you highlighted कि public में media का भी image जो है वो was like at a very sort of a low point. Was somebody is asked, can media be considered as a player in downplaying the situation? Because while a general impression, I can't even say anything about the neighboring countries as well, but Pakistan में at the height of the first wave की peak पे, when the entire world was saying जी कोविड है, लॉकडाउन है, माइक्रो लॉकडाउन्स हैं, पाकिस्तान में ये इम्प्रेशन था कि नहीं जी हम तो इम्यून हैं, हम तो जेनेटिकली इम्यून हैं, एंड इट्स ओके, तो आप ईद की शॉपिंग भी करें जाके और जो मर्जी करें. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? So, okay, just in terms of the time given to the coverage, I would say कि media ने अपना role play किया. There was a lot of coverage. अब बहुत कम हो गई है, compared to what was going on, the kind of coverage it was getting in during the first wave. हाँ, किस तरह से कवर किया उसके ऊपर obviously there is a debate. जो question में I think what I found interesting is whether media play is a player in, ये पूछा ना उन्होंने कि under. तो आई थिंक फॉर पब्लिक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मीडिया का अपना न्यूज साइकिल किस तरह से ऑपरेट करता है, स्पेशली टीवी का, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन टीवी पे रिलाई करती है. देयर वर very real issues of media being blocked access कोविड के हवाले से. मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी जो हमने कवर की थी फैसलाबाद से, जहाँ पे एक डॉक्टर साहब ने वीडियो बनाई थी जो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, एंड ही वर्कड एट सम गवर्नमेंट फैसिलिटी, एंड ही सेड के फैसिलिटी में मरीज बहुत ज्यादा हो गए, कम हो गए. इट वाज बेसिकली एन अपील टू पब्लिक के आप एहतियात करें, क्योंकि जो आपका हेल्थ का सिस्टम है वो ओवरवेलम हो गया है. उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट की, वो वायरल हो गई. उस पर उनके 2-3 दोस्तों ने जो वहीं हॉस्पिटल में काम करते थे, मजीद डॉक्टर्स ने उस पर कमेंट किया, एंड व्हाट हैपेंड रादर देन द गवर्नमेंट अप्रिशिएटिंग कि एक डॉक्टर ये कह रहा है लोगों से कि मतलब खराब है हालात, आप एहतियात करें, आप मास्क पहने बाहर ना निकलें. द डॉक्टर एंड ऑल द 3 डॉक्टर्स who had either liked or commented on that post, they got a notice from the health secretary in Punjab saying कि आप पैनिक फैला रहे हैं. और उन्हें नोटिस दिया गया, उन्हें शो कॉज दिया गया उस हवाले से कि आप क्यों पैनिक फैला रहे हैं, और फिर एक नोटिस जारी किया गया कि ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं. सो आई फील कि जो मीडिया का रोल है ना, अब आप सोचे कि ये एक डॉक्टर साहब हैं जो पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं, जितने भी वायरल हो गए उनकी जो रीच है वो मीडिया जैसी नहीं हो सकती. वी आर ऑपरेटिंग इन अ कंट्री जहां मीडिया के ऊपर अभी एक रिपोर्ट आई है, आई थिंक
आई डोंट रिमेंबर द इदारा, मैं आपको भेजूंगी। इसमें कहा गया कि 2020 पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम के हवाले से बदतरीन साल था। जितने भी इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हो या सीपीजे का हो, उन सब में पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो फॉल कर रहा है। सो ये जो एक्सप्रेस ना करने का वो है, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ ले ऑफ्स इन द मीडिया इंडस्ट्री इन 2020, पे कट्स हुई हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ब्लॉक की गई है, मखसूस देयर इज अ पोलराइजेशन, एंड हमें एडमिट करना चाहिए मीडिया के अंदर भी बहुत पोलराइजेशन है। देयर इज अ पब्लिक परसेप्शन कि ये चैनल इस पार्टी का है, ये चैनल इस पार्टी का है, तो वो जिस भी पार्टी का और जो हुकूमत है वो किसी एक चैनल को इंफॉर्मेशन देती है, इंटरव्यूज देती है और दूसरे को नहीं देती। देन इफ यू रिकॉल, तो अगस्त और सितंबर में खवातीन जर्नलिस्ट के ग्रुप ने जो 150, आई थिंक 165 जर्नलिस्ट थी, जिन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला था, 2 स्टेटमेंट्स निकाले थे, जिनमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे ऊपर न सिर्फ अब्यूज और अटैक्स हो रहे हैं, बल्कि कोविड के हवाले से स्पेसिफिकली उन पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और ये इल्ज़ाम ऐसे अकाउंट्स की, ट्विटर अकाउंट्स की तरफ से लगाया जाता है जो या तो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुंसलिक हैं, या वो ये क्लेम करते हैं कि हम इन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स हैं, और इन पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी रेपुटेशन, उनके इमेज और उनके ऊपर जो भी बातचीत होती है उस पर हम बात करते हैं। एंड दे इंक्लूडेड एग्जाम्पल्स जिनमें उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये गलत बात कर रही हैं। रिसेंटली आई थिंक पिछले महीने पीटीआई के एक ऑफिशियल अकाउंट से एक लिस्ट ट्वीट की गई जिसमें कहा गया कि ये ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं, ये अनऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं। सो ये जो मीडिया को डिस्क्रेडिट करने का सिलसिला था, ये इंफॉर्मेशन एक्सेस के ऊपर भी था, और ये डायरेक्ट अटैक्स के थ्रू भी था। वो ट्वीट बाद में डिलीट कर दी, बट ट्वीट हुई थी और उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, और मतलब उसके बाद जर्नलिस्ट टैग हुए थे। सो इस एनवायरनमेंट में आई थिंक पब्लिक भी थोड़ी सी मीडिया के साथ अनफेयर हो जाती है। It's not their fault. They probably don't understand the restraints that journalists are operating in, but these are all realities. उनके ऊपर नौकरी का प्रेशर है, उनको इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं मिल रही, फायरिंग हो गई है, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि काम कम हो गया है। हर रिपोर्टर का काम 10 गुना बढ़ गया है, वो फील्ड में जा रहे हैं। देयर हैव बीन मल्टीपल डेथ्स इन द इंडस्ट्री कोविड से रिलेटेड, जो कोविड से इफेक्टीज हैं। मोरल आप सोचे कि आपने फिर भी फील्ड में भी जाना है, आपने ऑफिस भी जाना है, इस सिचुएशन में जब आप लिटरली, अब ये लाइफ का रिस्क है, और उसके ऊपर पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस और पब्लिक की तनकीद और पॉलिटिकल पार्टीज की तनकीद, वो सब बर्दाश्त करते हुए आई थिंक ओवरऑल मीडिया हैज रिस्पॉन्डेड एज बेस्ट एज दे कुड। Yes, there is always room for improvement. Yes, obviously professionalism की कमी है, ethics की कमी है, मैं इनको बिल्कुल डिनाई नहीं करी, but I think there is also a need for public to stand with the media and help them reach that place जहाँ वो खुद अपनी इम्प्रूवमेंट की बात कर सके, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है बिल्कुल रॉक बॉटम है, ना वो इम्प्रूव हो सकते हैं, ना उनके पास पब्लिक की सपोर्ट है, ना उनके पास हुकूमत की सपोर्ट है, और इसके अंदर इम्प्रूव करना इज रियली रियली डिफिकल्ट। सो आई थिंक या आई वुड से कि दिस इस डायनामिक को जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा जहन में रखें, और मीडिया के प्रेशर्स को भी जहन में रखें। You mentioned the political association of private channels. So, my next question is sort of connected to that, and that is, in your experience, because it's considered कि privatization जब हुई पाकिस्तान में, and this explosion of channels basically जब हुआ, from a time when there were a handful of channels. So initially it was thought that this is good because there are more diverse resources, and as जैसे जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो everybody is of the opinion कि बेहतर होगी चीजें, there will be a diversity of thought process and वो सारा कुछ, and somebody has asked do you think over time that has sort of turned around, and वो जो diversity थी वो because of these political pressures and these political associations, वो that has sort of not helped the industry, media industry and itself, but sort of taken away the core components जो होते हैं media के? Yes, so there are two dimensions to it. एक तो I would agree the media industry is not able to diversify information the way it should, क्योंकि not just in political terms but also in terms of जो हम पहले marginalized communities की बात कर रहे थे, right? जो मीडिया का फोकस है वो बहुत अर्बन है, वो कुछ मखसूस शहरों पर है, वो कुछ मखसूस इश्यूज पर है, और वो बहुत सारे इश्यूज विच अफेक्ट द लार्जर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वो उन पर नहीं है। बट वॉट you'll see interestingly, जब आपको मीडिया पे तनकीद भी मिलेगी तो वो इस एंगल से नहीं मिलेगी कि ह्यूमन एलिमेंट
मिसिंग है या डेवलपमेंट के इश्यूज नहीं आ रहे, वो तनकीद भी सिर्फ पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से मिलती है, एंड आई थिंक दैट्स टेलिंग। मीडिया इंडस्ट्री इन पाकिस्तान वो प्राइवेट ज़रूर है, बट देर आर ऑल्सो इश्यूज विद हाउ the laws regarding media industries have been framed. I agree with what they're saying that media industry has not been able to diversify. ये नहीं है कि वो गलत हो गया, वो या उल्टा हो गया। आप सिर्फ पीटीवी देखें और आप बाकी सारे चैनल्स देख लें, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा। जो हमारे पीटीवी के नए चेयरमैन साहब लगे, नईम बुखारी, वो बहुत ओपनली कह चुके हैं कि हम तो सिर्फ हुकूमत को टाइम देंगे, हमारा हम क्यों किसी और को टाइम दें, हालांकि वो पब्लिक मनी से जाता है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से नहीं पीटीवी चल रहा है, वो पब्लिक मनी से चल रहा है। बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट द थिंग इज कि एक तो ये कि हाँ, जितना अच्छा होना चाहिए था, जितना डाइवर्सिफाई होना था, वो मीडिया नहीं कर सका। देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज विद प्रोफेशनलिज्म, विद रिप्रेजेंटेशन, बट यू हैव टू ऑल्सो सी इट इन द लार्जर पिक्चर। पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, वो जो पेमरा लॉ है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अंदर ऑपरेट करते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें, एंड फाइनेंसेस आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, एंड पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कमर्शियलिज्म या पैसा को एक बुरा ही चीज के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। For a media industry to operate properly, they need to be able to make money. They need to be able to pay the people that they are employing. क्योंकि अगर सहाफी को और रिपोर्टर को पैसे नहीं मिलेंगे नौकरी से, तो फिर करप्शन का दरवाजा भी खुलेगा, देन दे विल आल्सो नॉट बी एबल टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। सो पैसे को जो एक बुरा वर्ड बनाना और कमर्शलाइजेशन को बुरा वर्ड बनाना और उसको गलत समझना, डर्टी समझना, आई थिंक दैट डज नॉट मेक सेंस फॉर एनी इंडस्ट्री टू ऑपरेट, वेदर इट्स मीडिया, वेदर इट्स नॉट। जो रेवेन्यू की जनरेशन है लीगली, जो legally possible, I think it's extremely important. Now, how Pakistan differs from other countries in the region and in the world, पाकिस्तान अभी भी ब्रॉडकास्ट एक एनालॉग मॉडल पे काम करता है, जहां आपका जो केबल ऑपरेटर है वो पैसे आपसे लेता है, जो आपके व्यूअर्स हैं। हम डायरेक्टली जियो को या एयरवे को या समा को हम डायरेक्टली कौन से पैसे देते हैं? वी डोंट गिव देम एनी मनी, सो दे आर नॉट इन अ डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद दैट, व्हाई शुड दे सर्व आवर इंटरेस्ट? उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है वो एडवर्टाइजर्स के साथ हो रही है। इसीलिए आप ये देखें कि एडवर्टाइजर्स और कॉर्पोरेट्स जिन मार्केट्स में सर्व करते हैं, जो अर्बन अर्बन पाकिस्तान है, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि वो मार्केट उन्हें सर्व कर रही है। सो अनलेस आवर लॉज आर इवॉल्व्ड इन अ सर्टेन वे, जहां पे जो मीडिया के कंज्यूमर्स हैं और जो मीडिया मालकान हैं और जो मीडिया इंडस्ट्री है, उनका आपस में कोई फाइनेंशियल राब्ता कायम हो, एंड मीडिया इज एबल टू अर्न डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर्स रादर देन केबल ऑपरेटर्स मेकिंग मोर, लाइक देयर वाज अ रिसर्च दैट वी डिड, आई विल शेयर विद यू, 2-3 साल पहले हमने की थी, इस साल हम उसको रिवाइज करेंगे, उसका नया वर्जन लेके आएंगे, जिसके अंदर ये था कि जो पाकिस्तान का पूरा एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, वो जो केबल ऑपरेटर्स अर्न करते हैं वो उससे कम है। यानी पूरी मीडिया इंडस्ट्री मिलके जो शेयर कमा रही है, केबल ऑपरेटर्स उससे कहीं ज्यादा शेयर कमा रहे हैं। तो अगर आपका ये थर्ड मैन, जो बीच में मिडल मैन है, ये जब तक रहेगा, जब तक मीडिया इंडस्ट्री उस तरह से कमर्शियली ग्रो नहीं कर सकती, उनकी डिपेंडेंसी रेटिंग्स पे भी, उनकी डिपेंडेंसी उन एडवर्टाइजर्स पे भी रहेगी। सो दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फैक्ट कि डाइवर्सिटी क्यों नहीं हो पाती। ऑब्वियसली जो हमारी पब्लिक है पाकिस्तानी, हेवली पॉलिटिसाइज, आप टैक्सी में चले जाएं, आप पान खाने चले जाएं, आप दुकान पे चले जाएं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, राइट? एग्जैक्टली। सो जो रिस्पॉन्स आता है, रिएक्शन होता है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी ना होने के ऊपर आता है, और पब्लिक जो चीज चाहती है या उन्हें जो जरूरत है, लोगों को शायद पता भी ना हो कि उन्हें किस चीज की जरूरत है इन सर्टेन पार्ट्स, क्योंकि हमने उन्हें दिया नहीं है ना, उन्हें नहीं पता मीडिया ये भी कर सकता है, मीडिया डेवलपमेंट इश्यूज पर भी काम कर सकता है, मीडिया इकोनॉमी को किस तरह बेहतर तौर पर रिपोर्ट कर सकता है। सो आई थिंक ये जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है मीडिया का, इट ऑल्सो एड्स टू द फैक्ट कि मीडिया इस वक्त जहाँ खड़ा है वहां पे है कि पोलराइजेशन है, हर एक को पावर हाउसेस से कनेक्शंस बनाने की जरूरत है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बना लेता है, कोई किसी के साथ बना लेता है। इट्स, आई थिंक इट्स अ रैट रेस फॉर सर्वाइवल एट द मोमेंट, और उसके अंदर कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे, और पब्लिक सफर कर रही है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसकी वजह क्या है, लेकिन पब्लिक सफर कर रही है। तो जो कंसर्न्स हैं, दे आर जेन्युइन। I just hope कि people are able to understand कि जो प्रोटेस्ट है या जो गुस्सा है, वो सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री पे नहीं, वो उन पॉलिसीज पे और उन पॉलिटिकल जो भी हुक्मरान इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, इन पॉलिसीज को बेहतर ना करने पे, वो प्रेशर जब तक उधर से नहीं आएगा और जब तक पॉलिसी चेंज नहीं आएगा, शायद इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भी उस तरह से ना चेंज हो सके। नहीं, it makes sense, and I agree with you कि I don't think कि जनरल पब्लिक वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट जो है वो अंडरस्टैंड करती है।
in other countries we get specifically America को देखते हैं because there was a study काफी पुरानी study है I don't know किसने की थी where they basically saw कि जो public के भी जो general trends है ना conservatism या liberalism या understanding was sort of mapped to what the American public के ओपिनियन सो काफी सिमिलर थे अमेरिकन और पाकिस्तानी के एंड इफ वी नो के अमेरिकन इलेक्शंस आर हेवीली कॉर्पोरेट फंडेड एंड दे हैव इश्यूज तो आई थिंक पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के भी फाइनेंशियल उसमें इश्यूज हैं लास्ट क्वेश्चन is sort of about the national strategy around COVID and somebody has asked ki government ki national strategy even if there was media given sort of a good window into it? Was it because you already हमने अपनी discussion में highlight किए कि access के issues in Pakistan in general हैं and during the pandemic भी थे जैसे आपकी वो फैसलाबाद वाली example भी I think it's quite eye opening but in generally whatever अगर आप एक simple PR वाला aspect ही देख लें तो was there some open communication from the government's end? तो आई थिंक एक तो ये कि जो एनसीयूसी के फिगर्स थे वो मीडिया को ऑब्वियसली प्रोवाइड किए जा रहे थे दैट वाज अ गुड थिंग कि फिगर्स कम मिल रहे हैं वो कितने यूजर फ्रेंडली अंदाज में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट एक तो ये था दूसरा ये कि द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जो एडवाइजर्स हैं हेल्थ के ऊपर they were regularly holding press conferences. So जो basic information, I think the provision of that basic information was good. I think what was lacking was access to, what went on behind those policies. पॉलिसी तो आ गई है मगर क्या लॉजिक फॉलो की गई इसकी इम्पैक्ट गवर्नमेंट क्या अफेक्ट कर रही है या जो क्रिटिकल क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे उनके रिस्पॉन्सेज फॉर एग्जाम्पल देयर वर मल्टीपल ओकेजन जहाँ पे जो सूबों से फिगर्स आ रहे थे और जो सेंट्रली फिगर्स आ रहे थे उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी उसमें डिफरेंसेस पाए जा रहे थे लेकिन जब उनके हवाले से सवाल उठाया जाता था तो उन पर जवाब नहीं मिलते थे सो आई थिंक एक बेसिक लेवल पे जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए दैट वाज प्रीटी रेगुलर both in terms of press conferences, both in terms of access to those people. But जो critical चीजें थी या जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन थी या जहाँ कोई इन डेप्थ जाना चाहे तो उसमें जर्नलिस्ट को एक्सेस के इश्यूज पेश आए आई थिंक दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड एंड आई थिंक एक थोड़ा सा ये जो फेस सेविंग या डिफेंसिवनेस वाला एटीट्यूड है अगर हुकूमत उसमें ना पड़ती तो शायद ये बेहतर होता क्योंकि I think there's nobody among us who doesn't agree with the fact that this is an unprecedented situation for any government. तो कोई भी मौका तो गवर्नमेंट से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था या हम सबको अच्छी तरह पता है कि हमारी हेल्थ सिस्टम की क्या सिचुएशन है तो जो भी रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो उसी सिचुएशन के अंदर किया जा रहा था आई थिंक द गवर्नमेंट वाज टू डिफेंसिव एंड उसकी वजह से थोड़ा सा मिसट्रस्ट ना हुकूमत ने मीडिया पे उस तरह ट्रस्ट किया हम जो वो भी बहुत चैलेंज फेस कर रहे होंगे और ना मीडिया उस तरह से चीजों को वाज़ेह को हाईलाइट कर सका जिनके हाईलाइट में शायद कुछ बेहतरी it gives people the opportunity to rethink their positions. Just to उसको wind up करने से पहले just one bit to I would add to this question because आपकी रिपोर्ट में भी ये mention था about the app जो गवर्नमेंट ने बनाई थी public said that they knew about the app but they were not really dependent on it so my question would be was media actually keeping a close look on that app and as you said कि numbers जो आ रहे थे उनमें discrepancies थी provincial numbers में तो any your own personal feedback because obviously when you were doing the study or I'm assuming you know had a look at the app कि उसका क्या structure था was it like was it easy to communicate with या वो understandable थी in your opinion for the general public or for media individuals Yeah, so I'm not sure मीडिया ने कितनी नजर रखी एप्लीकेशन पे जो मोबाइल एप्लीकेशन थी आई डू नो के कम से कम जो लोगों को मैं जानती हूँ वेबसाइट जरूर विजिट करते थे both the app and the website are easy to understand but they are very heavy
सो आप अगर वेबसाइट खोलें तो आपको कनेक्शन अच्छा चाहिए, आपको वाईफाई चाहिए, उसको लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितने में वो लोड होती है, आप कोई और गूगल के किसी इंटरनेशनल डेटाबेस से फिगर्स निकाल लें। सो आई थिंक टेक्निकली इट वाज नॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स दैट कुड हैव बीन गिवन। उसको इतना हैवी नहीं होना चाहिए था जितनी वो बनाई गई थी। दूसरा ऑब्वियसली देयर इज एन इशू ऑफ ट्रस्ट, उसके उसके भी आई थिंक ये भी रीजन है। स्पेशली जो मोबाइल एप्लीकेशन थी उसके ऊपर से कुछ प्राइवेसी के इश्यूज भी सामने आए थे शुरू में जब ये बनाई गई थी, और जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाला स्पेसिफिकली जो आस्पेक्ट था, देयर वाज अ लीक, एक पीडीएफ लीक की गई थी ट्विटर के ऊपर, जिसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया था, बल्कि हुकूमत ने सिंपली इसी तरह का कुछ रिस्पॉन्स दिया था कि हम इमरजेंसी सिचुएशन है और ये वो, पीपल शुड जस्ट अप्रिशिएट। तो ये जो इश्यूज आए सामने, और जाहिर है देयर इज अ टैबू अराउंड कोविड इन आवर सोसाइटी एज वेल, लोग नहीं बताना चाहते। तो ये इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये सारी चीज़ों का आई थिंक मिक्स हो जाना भी उस ऐप में मे हैव डिस्करेज पीपल फ्रॉम काइंड ऑफ यूजिंग इट मोर इफेक्टिवली। आई थिंक जो मेन रीजन है ना यूज करने की वो एक्सेस की ही बात है। हर एक के पास अच्छा वाईफाई नहीं होता, और ना हर पास इतना टाइम होता है कि वो बार बार एक चीज को रीलोड करने की कोशिश करे। इफ इट वाज टेक्निकली बेटर, आई एम श्योर कि थोड़ी बहुत तो इसकी अपटेक बढ़ती। yeah. Thank you so much for your time. This was a very interesting session. This was a very interesting study, and hopefully we'll have you back for some all आपकी कोई और studies जब आप करोगे तो we would like to have you back and discuss those as well, because this is a very Thank interesting you. work that you are Very doing. nice. Thank Yeah. thank you for your Thank you. time. Bye. Hafiz.